संवैधानिक पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए धारा 370 56(1) states that the भट्टे को President लेकर may, by a जो फैसला आना है proclamation, उसको लेकर ये फैसला assume or सुनाया जा रहा है। declare the powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1). The powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1) are not automatically invoked when a proclamation is issued under Article 356. Third, Article 356(1)(a) does not opt for an all or none formula. The phrase all or any does not indicate that the union government can exercise a part of the functions of the state government and the state government can exercise the remaining, because the suspension of the state government is an automatic consequence of the proclamation under Article 356. It rather indicates that the scope of the power exercised by the union government must depend on the circumstances for issuing the proclamation. Fourth, clauses A, B, and C of Article 356(1) grant the President independent powers. However, the power provided under Clause C is broad enough to encapsulate the power of the President to assume functions under Clause A and declare under Clause B that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by Parliament. Fifth, the principle underlying Article 356(1)(c) is that the exercise of power by the President must be desirable or necessary to give effect to the objects of the proclamation. The commonality in both the necessity and desirability standard is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. Thus, the principle which runs through Article 356(1)(c) and which also guides the exercise of power under Article 356(1)(a) is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. And sixth, when a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the union executive on behalf of the state is not subject to challenge. Opening up challenge to every decision would lead to chaos and uncertainty. It would in effect put the administration in the state at a standstill. Therefore, the following standard is laid down to assess actions under Article 356 after the proclamation has been issued. A, the exercise of power by the President under Article 356 must have a reasonable nexus to the object of the proclamation. B, the person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. After a prima facie case is made, the onus shifts to the union to justify that the exercise of power had a reasonable nexus with the object of the proclamation. And C, the exercise of power by the President for everyday administration of the state is not ordinarily subject to judicial review. The argument of the petitioners that the union government cannot take actions which have irreversible consequences when a proclamation under Article 356 is in force is not accepted. The power of the legislature of the state under Article 357 to repeal or alter or amend a law enacted by Parliament in exercise of the power of the legislature of the state must be read in the context of the amendment introduced by the Constitution, 42nd Amendment Act 1976. Before the amendment, the law to the extent of incompetency would automatically cease to exist after a buffer period and actions done were expressly saved. However, an express repeal by the competent legislature is required for the law to cease to exist after the amendment. The repealing statute would in such case make provisions for actions taken during the subsistence of the legislation. The observations in Krishna Kumar Singh on whether the consequence of an ordinance can subsist even after the ordinance ceases to exist cannot be transposed to interpret the limits of Article 356 because an ordinance which has the effect of a law by its very nature has a limited life. The argument of the petitioners that Parliament can only assume the lawmaking powers of the legislature of the state when the proclamation under Article 356 is issued is not accepted. The purpose of Article 357 is to ensure that while exercising the powers of the legislature of the state pursuant to a declaration under Article 356(1), Parliament, or as the case may be, the President, are not impeded by an absence of competence which would have impeded the exercise of a similar power in the absence of a proclamation under Article 356. Further,
Article 357 does not contain a non-obstante provision which overrides Article 356. To interpret Article 357(1) as a restriction on Article 356(1)(b would be to read in a restriction which the plain terms of the Constitution do not provide. As held above, the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review, and immunity from judicial scrutiny does not attach to the exercise of constitutional powers of the legislature of the state. The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by Parliament has a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the proclamation. The next issue is whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state, which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. It is reiterated in Section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir, which is unamendable. Sixth, the preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, Sections 3, 5, and 147 of the State Constitution, coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination, as understood by the definition of sovereignty, exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own Constitution. Seventh, all states in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. The Constitution accommodates concerns specific to a particular state by providing for arrangements which are specific to that state. Articles 371A to 371J are examples of special arrangements for different states. This is a feature of asymmetric federalism, like Article 370, which became applicable to Jammu and Kashmir on the adoption of the Constitution. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And eighth, the limited question before the Constitution bench in its decision in Premnath Kaul was whether the monarch held plenary legislative powers after the Constitution of India as it applied to Jammu and Kashmir was adopted in the state, but before the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted. A decision is an authority for the proposition which it decides. The question whether the state of Jammu and Kashmir
retained sovereignty upon integration with the dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273. To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose, to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. D. On the second question of the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370, we have held that the power of the President of India under Article 370, Clause 3, to issue a notification declaring that Article 370 ceases to exist, subsists even after the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir for the following reasons. First, the proviso to Article 373, that is Clause 3, केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं है, ये कहना है जज का। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रही है। और देखिए, ये फैसला जो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था 370 हटाने का, वो सही है या फिर गलत, ये पूरी तरह से कुछ ही देर बाद स्पष्ट कर दिया जाएगा। 5 जजों की बेंच जो अपना फैसला सुना रही है, और साथ ही 5 जजों की जो सहमति है वो एक ही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। जिस तरह से विपक्षी पार्टी की तरफ से कई बड़े सवाल भी खड़े किए गए थे, पूरे प्रोसेस को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन अब यहां पर सहमति 5 जजों की बनती हुई नजर आ रही है। तो धारा 370 को लेकर थोड़ी देर में पूरा फैसला सुना दिया जाएगा और उसके बाद में यह साफ हो जाएगा कि क्या यह फैसला सही था या फिर गलत। तो 4 महीने पहले केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है, और उसके बाद से लगातार ये मामला कोर्ट में चल रहा था। और आज का दिन बेहद अहम, आज अंतिम फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रही है, और साथ ही देखिए, एक बड़ी बात जो कही गई है कि अनुच्छेद 370 जो कि अस्थायी था, स्थायी नहीं था, यानी कि कुछ वक्त के लिए ही लगाया गया था। एक बहुत बड़ी बात जज की तरफ से यहां पर कही गई कि अनुच्छेद 370 परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी था। तो यानी कि यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के पक्ष में यह फैसला आ सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी कुछ और वक्त लगेगा, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अपने फैसले में कहा जाता है। लेकिन जो 2 बड़ी बातें अभी तक कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहला तो ये कि जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है, और दूसरी बड़ी बात ये कही गई कि जब धारा 370 1949 में लगाया गया था वो परमानेंट नहीं था, वो सिर्फ टेम्परेरी ही लगाया गया था। तो इससे ये माना जा रहा है कि बहुत हद तक ये फैसला
सरकार के पक्ष में हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता खुर्रम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। खुर्रम, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रही है, लेकिन 2 बड़ी बातें अभी तक जो कही गई, पहला तो ये कि ये परमानेंट नहीं था, ये टेम्परेरी था, और दूसरी बड़ी बात ये कही गई कि जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपना फैसला सुनाया है, उससे साफ है कि जो तमाम याचिकाकर्ता जो चुनौती देने के लिए पहुंचे थे कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से धारा 370 को निरस्त किया गया वो असंवैधानिक था, वो तमाम याचिकाएं एक तरीके से खारिज कर दी गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति जी के पास वो तमाम अधिकार मौजूद हैं जो जिसके द्वारा उन्होंने जम्मू कश्मीर में राज्य की जो शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग किया और उसके द्वारा वहां से 370 को निरस्त किया। 370 परमानेंट नहीं था, और जम्मू कश्मीर की जो संप्रभुता है जिसकी हम बात लगातार करते रहे कि जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय हो गया तो वो विलय पूर्ण था, जम्मू कश्मीर के पास अलग से कोई संप्रभुता नहीं बची थी। यही कारण है कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, और एक तरीके से सरकार के फैसले को सीधे तौर पर अभी तक जितना फैसला पड़ा गया है उसमें हरी झंडी दे दी गई है, उस पर मोहर लगा दी गई है। सरकार ने जो किया संविधान के दायरे में किया, ठीक किया, चाहे संप्रभुता सरेंडर करने की बात हो। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, जिस तरीके से भारत के तमाम राज्य हैं उनकी जो संप्रभुता है उससे अलग जम्मू कश्मीर की संप्रभुता नहीं है, वो सरेंडर हो गई थी। इसलिए ये कहना कि 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता था, वहां के संविधान सभा से सिफारिश लेनी जरूरी थी, तो तमाम तर्क हैं। इस पूरे तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से खारिज कर दिया है, और ये तमाम जो याचिकाएं हैं वो साफ तौर पर खारिज हो गई हैं। जो चुनौती थी वो खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरीके से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था उस पर कोई फैसला नहीं दिया, कहा कि उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर उसको याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई थी। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लग गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो किया वो सही किया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था उसको कोर्ट ने सही बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है, और अपने आप में ये एक बड़ी खबर, क्योंकि लगातार जो प्रोसेस थी 370 हटाए जाने की उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन जो बड़ी बातें कही गई हैं कोर्ट की तरफ से वो हम आपको बता रहे हैं कि विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता छोड़ी, और साथ ही अनुच्छेद 370 पर चीफ जस्टिस अपना फैसला पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है। और साथ ही किस तरह की और अपडेट मिल पा रही है, हालांकि अभी तो फैसला सुनाया ही जा रहा है, कितनी देर में जो 5 जजों की बेंच बैठी हुई है वो पूरी तरह से अपना फैसला सुना देगी? बिल्कुल, देखिए अभी फैसला सुना रहे हैं और इसमें कुछ समय जरूर लग सकता है। कितनी देर लगेगी ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि कितनी देर में वो अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी मोटी बातें हैं जो चीफ जस्टिस ने शुरू में ही कही थी कि 3 फैसले हैं और अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन तीनों का निष्कर्ष वो एक ही है, और वो निष्कर्ष ये है कि जम्मू कश्मीर में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो भी या जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग हो चुकी है, संविधान सभा भंग हो चुकी है, उस समय भी राष्ट्रपति जी के पास पूरा अधिकार है कि वो 356 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 370 को हटाने का निर्णय का अधिकार उनके पास है। ये बड़ी बातें जो है अभी तक चीफ जस्टिस ने ये अभी तक कही हैं, और कहना चाहिए ये सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, वो तमाम याचिकाकर्ता जो सरकार के इस फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट आए थे, उनको सीधे तौर पर धक्का लगा है, क्योंकि उनकी याचिकाएं एक तरीके से खारिज हो गई हैं, उनकी कोई बात मानी नहीं गई है। क्योंकि जब राष्ट्रपति जी का अधिकार मान लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार के फैसले पर, राष्ट्रपति जी के फैसले पर मोहर लग गई है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाना सही था, अब ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या परिवर्तन आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी, जैसा कि आपने जिक्र भी यहां पर किया कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को बार बार भुनाने की कोशिश करती थी, वहां की जनता को भी बरगलाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था उनके पास में वो अब छिनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह की बड़ी बातें अभी तक कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, उसको देखकर लगता है कि यह फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में ही आएगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तरीके से चीफ जस्टिस ने पहले ही कहा था। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। पहले ही कहा था कि 3 अलग अलग फैसले हैं, लेकिन तीनों का निष्कर्ष वो एक ही है। तो ये जो फैसला पढ़ा जा रहा है, आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से जो दूसरे फैसले पढ़े जाने वाले हैं, वो फैसलों का निष्कर्ष भी यही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने पहले ही कह दिया है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की राजनीति का सवाल है, जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये फिलहाल ये बड़ा मुद्दा जरूर है, लेकिन समय आते आते ये तमाम चीजें पीछे छूट जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय था जब दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था 1951-52 में, और उसके बाद से जम्मू कश्मीर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। एक समय वहां ये भी था कि वहां पर राष्ट्रपति होता था, वहां का अपना अलग सदर होता था, वहां का वजीर आजम होता था, लेकिन उससे आगे बढ़ा है जम्मू कश्मीर। तो धीरे धीरे ये तमाम चीजें पीछे छूट जाएंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, वो पूरे तौर से भारत में विलय के साथ समाप्त हो गई थी। राष्ट्रपति जी को पूरा अधिकार था, राष्ट्रपति जी के पास उस समय भी पूरा अधिकार है जब जम्मू कश्मीर में संविधान सभा मौजूद नहीं है कि वो 370 को हटा सके। तो जो पूरे तर्क, जो बुनियादी तर्क था, वो सीधे तौर पर क्योंकि खारिज हो गया है, इसलिए इस पूरे फैसले में कहीं ना कहीं अभी तक जो फैसला आया है वो पूरा का पूरा फैसला केंद्र सरकार के हक में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री जिस तरीके से ये कहते रहे कि 370 से बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, वो तमाम राजनीति अपनी जगह, लेकिन कानूनी और संवैधानिक रूप पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर अपनी मोहर लगाई है। और जो बड़ी अपडेट मिल पा रही है, बरकरार रहेगा 370 हटाने का फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 5 जजों की बेंच अभी तक अपना फैसला सुना रही है, लेकिन कोर्ट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि धारा 370 हटाने का जो फैसला लिया गया था वो आगे भी बरकरार रहेगा। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और यहां पर वक्त हो गया है